हेलो दोस्तों, मैं हूँ आर्यन सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यार से चैनल बीसीए वाली। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से बेसिक से लेकर एडवांस तक की पूरी सीरीज। चाहे आप वो कंप्लीट बिगिनर या फिर करना चाहते हैं आप अपने कंसेप्ट को ब्रश अप, देन यू हैव कम टू द राइट प्लेस। बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट्स माई एश्योरेंस टू यू। चलिए शुरू करते हैं एंड अनलॉक द फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ कंप्यूटर टुगेदर। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि इनपुट को प्रोसेस करके प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। ये डेटा को स्टोर, रिट्रीव और एनालाइज करने के साथ ही मल्टीपल टास्क को भी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकता है, मेकिंग इट एन एसेंशियल टूल फॉर वेरियस फील्ड्स लाइक बिजनेस, रिसर्च एंड एजुकेशन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। जो काम इंसान कई घंटों में कर सकता है वही काम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स या फिर मिली सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता है। सेकंड होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है। अगर हम लोगों ने उसे सही इनपुट दिया जाए तो आउटपुट हमेशा 100% एक्यूरेट ही आता है। कंप्यूटर गलतियाँ तभी करता है जब उसको इनपुट ही गलत। थर्ड होता है ऑटोमेशन। कंप्यूटर बिना रुके काम कर सकता है। अगर एक बार उसे इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकता है। मैन्युअली उसे बार बार इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती। चौथा होता है स्टोरेज। कंप्यूटर में बहुत स्टोरेज की कैपेसिटी होती है। लैक्स ऑफ फाइल्स कैन बी इजीली स्टोर्ड एंड कैन बी इजीली एक्सेस वेन एवर वी नीड इट। ओके। फिफ्थ होता है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर एक बार में अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि कैलकुलेशंस, वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग एक्सेट्रा। सिक्स्थ होता है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर बहुत रिलायबल होता है। अगर उसे करेक्ट मेंटेन किया जाए तो वो बिना इशू दिए अपने टास्क परफॉर्म करता जाएगा। सेवेंथ होता है प्रोवाइड कैपेबिलिटी। तो कंप्यूटर ऐसे टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो, जैसे लार्ज डेटा को प्रोसेस करना या फिर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ओके, तो ये रहे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, वो भी एक सुंदर सिंपल स्टोरी के फॉर्मेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। Have you ever wondered how your tiny smartphone packs more power than the computer that sent astronauts to the moon? It's mind blowing, isn't it? Today we are dividing into the fascinating journey of the computer evaluation. From ancient tools used for counting to the powerful devices we have in our hands today, the evolution of computer is not just a tale of technology, but also a reflection of human ingenuity. Let's start our journey way back in the history. Our story begins in ancient times with the abacus. Yes, the humble abacus. Dating back over 2000 years, it was one of the first tools used for calculations. Though it seems simple, the abacus laid the groundwork for future computing devices. People used it to perform basic arithmetic relying on bits sliding on rods. Fast forward a few centuries to the 17th century. This is when we met Blaise Pascal, a French mathematician who created Pascaline. The Pascaline was a mathematical calculator that could add and subtract. Imagine a machine that could perform calculations without a human direct invention. This was the beginning of machine designed specially for computation. Then came the 19th century, which introduced to the Charles Babbage. Often called the father of computer, Babbage designed the analytical engine. This machine was revolutionary because it had the concept of the programmable computer. It includes features like an arithmetic logic unit, control flow via conditional branching, and memory. Unfortunately, Babbage never completed the analytical engine, but his ideas were ahead of their time. As we moved into the 20th century, the demand for faster calculations rose with World War II. This led to the creation of some of the first electronic computers. In 1945, the ENIAC was born. ENIAC, which stood for Electronic Numerical Integrator and Computer, was a massive machine that took up an entire room. It could perform thousands of calculations per second. This was revolutionary. But ENIAC was not easy to operate. Next, in 1949, we saw the introduction of the first stored programmed computer, the EDSEC. Unlike
ENIAC, the ADSEC could store and execute instructions from memory. This was a significant milestone because it allowed programmers to input programs directly into the computer. As we entered the 1950s, the development of transistors changed the landscape of computing. Transistors were smaller, more reliable, consumed less power than vacuum tubes. This innovation led to the creation of the second generation of computers. These machines were more powerful, smaller, and more efficient, paving the way for modern computers. By the 1960s, the computer became more accessible to the businesses. With advancement in technologies, we saw the introductions of mainframe computers. These machines could handle multiple users simultaneously and were crucial for corporate data processing. As we transitioned into the 1970s, the personal computing began to take root. The launch of the Altair 8800 in 1975 is often credited as the beginning of the personal computer revolution. This kit was affordable and allowed hobbyists to build their own computers. Suddenly, computers was no longer just for big corporations. In 1976, Steve Wozniak and Steve Jobs launched the Apple I, making waves in the computing world. This made a shift toward the user-friendly interfaces and the personal ownership of computers. In 1980s, we witnessed a rapid increase in the popularity for the personal computers. Companies like IBM and Apple helped develop systems that were easy to use and widely available. With softwares like Microsoft Word and Lotus 1, 2, 3, computers found their way into homes and offices everywhere. The introductions of the graphical user interfaces during this time brought computers to life. Instead of typing endless commands, user could click and drag icons on the screen. Fast forward to 1990s and early 2000 when the internet changed everything. Computers become connected to a vast network, allowing for instantaneous communication and access to information. Email, web browsing, and the dawn of social media transformed how we interact with technology. Laptops emerged, making computers portable and convenient. As we entered the 21st century, technology continued to evolve at a staggering pace. Smartphones, tablets, and wearable tech began to dominate the market. These devices are essentially powerful mini computers that fit in our pocket. Robots and artificial intelligence begin to play a role in the workplace, making tasks easier. Cloud computing emerged, allowing users to store their data online and access it from anywhere in the world. Today, we stand on the brink of exciting advancements. The evolution of computers doesn't stop over here. We are exploring possibilities like quantum computing, which could revolutionize entire industries. As we look back at this journey, it's incredible to think about how far we have come. The evolution of computer is a testament of human creativity and innovation. If you found this journey through computer history fascinating, let us know in the comments. What part of the evolution surprised you the most? If you enjoyed this video, give it a thumbs up, share it with your friends. Don't forget to subscribe for more amazing content. Thanks for watching and keep exploring the incredible world of technology. सो आई होप अभी आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर समझ में आ गए होंगे और कोई भी डाउट्स नहीं होंगे. सो आज हमने देखा व्हाट इज़ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इन अ वेरी सिंपल स्टोरी टेलिंग फॉर्म. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम नए टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, जिससे आपके कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगी. ठीक है, सो आज की वीडियो के एंड में जाते जाते कुछ MCQ सॉल्व करके जाइए. अभी आप सॉल्व कर लेना, फिर जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब उन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने हैं तब. तो चलिए MCQs को देखते हैं.
सो आई होप अभी आपने क्वेश्चंस को नोट कर लिए होंगे और आंसर भी फाइंड आउट कर ही लिए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कोडिंग करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आवर टेक लवर्स। कोडिंग की टेंशन छोड़ो यार, कोडिंग करना होगा अब और भी मजेदार। BCA वाले है आपके साथ, तो फिर फिक्र की क्या है बात। C++ जावा के कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। BCA वाले करेंगे सॉल्व, get doubts from peer to peer to peer।